अस्सलाम वालेकुम और lab number 7 and 8 जो हैं those are on bridges, right? So there are two types of bridges जो आप study करेंगे. One is Wheatstone bridge and the next one is Kelvin bridge. And both of them are these DC bridges. We don't have any AC bridge in our lab. So bridge itself, the word bridge is clear enough. Okay, it's a kind of circuit which is balancing circuit, right? You have four nodes in it. In this specific arrangement, A, B, C and D आपकी four nodes हैं, four arms हैं, 1, 2, 3 and 4 resistance arms. Doesn't mean कि must resistance ही होंगे. Capacitance भी हो सकती है, inductance भी हो सकती है. When we move toward AC bridges, वहाँ पे capacitor and inductor भी involve होते हैं, right? Plus there is a detector and a source, right? अगर जो आपके source and detector हैं, both should be connected to opposite nodes. It means कि if I'm connecting B and D के साथ अगर मैं अपना detector या galvanometer connect करती हूँ, तो opposite two nodes के साथ I will be connecting my source, right? Same arm के साथ we cannot connect, right? Both the source and the detector, right? Okay. Theory is कि generally the bridge is balanced when your current flowing through your this specified detector is zero, right? So it means that the potential difference between your point B and your point D should be zero, right? And वो zero कब होगा? When the current flowing in this arm is equal to current flowing in this arm, and similarly यहाँ पे जो current flow होगा वो opposite arm में भी flow होगा. In other words, आप ये भी कह सकते हैं कि these two impedance should be equal, right? So when these two impedances are equal, E1 is equal to E2, then we simply can evaluate and you can find out that I1 Z1 is equal to I2 Z2, or we can also say that यहाँ से जो आपका current आ रहा है, nothing is flowing in this part and completely it's forwarded to Z3 side, right? So I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4, and when you simplify it, right, and तो आपका हो जाएगा I1 is equal to I3 is equal to E divided by Z1 plus Z3, right? Similarly, I2 is equal to Z4 is equal to E divided by Z2 plus Z4. If you equate both these values in this equation, you get this version, right? And you can cancel out the e's, and ये आप जब इसको simplify करेंगे by cross multiplication, you can simply get Z1 Z2 is equal to Z1 Z4 is equal to Z2 Z3, right? Which is the standard bridge balancing equation, right? Acha, what's the difference between an AC and DC bridge? DC bridges में you will be having a DC source, right? And आपकी जो load होगा that would be resistance, right? वहाँ पे आपकी inductor और capacitor की involvement नहीं होगी. AC में क्या होगा? You will be having inductors, resistances, capacitors, right? And plus आपकी जो source होगी that would be AC source, right? Resistance की जगह we use the word impedance, right? Because it involves resistors, inductors and capacitors, right? So specifically जो आपके AC bridges होते हैं, they are used for finding the unknown inductance, capacitance, storage factor, dissipation factors, etc., right? और जो आपका DC bridges थे, those are used to find the unknown resistances, right? So let's move toward the two sets of bridges which we have in our lab. One is Wheatstone bridge and next one is Kelvin bridge. So Wheatstone bridge में क्या होता है? Among these four resistances आपका कोई एक unknown होगा. Same formula है. The current flowing in this arm is equal to current flowing leaving, and nothing is flowing through your galvanometer, right? So you can say I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4, which is equal to the source voltage divided by the ये जो आपकी रेजिस्टेंसेस बनेगी, राइट? P प्लस Q, राइट? इसी तरह यहाँ पे भी आपका आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस S, एंड व्हेन यू इक्वेट इट बिल्कुल प्रीवियस मेथड से, राइट, व्हेन यू इक्वेट दीज टू वैल्यूज, you actually put these two values in this specified equation, right? And you equate them, equate them, right? तो आपकी जो फाइनल वर्जन आता है कुछ इस तरह का होता है. बिल्कुल सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई इट and one of the terms get cancelled and you final gets this version, right? जिसमें से you can easily find out कि आपका unknown resistance is equal to the ratio of the upper arm into the resistance on जो variable resistance है. But what's the
drawback of why we use Kelvin bridge, why we add other two versions of bridges, right? DC में ही why there are two versions, right? So Wheatstone bridge is actually एक तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है that is it can measure higher value resistances, right? लोअर वैल्यूज़ के लिए इट इज़ नॉट एक्यूरेट, वहाँ पे आपकी लीड रेजिस्टेंसेस का इफेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, सो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर दोज रेजिस्टेंसेस, राइट? पर्सनल एरर galvanometer में, that's the kind of error which is present in almost all kinds of bridges, right? But yes, it can Wheatstone is specific for higher value resistances. Kelvin bridge, when we move toward lower values resistances, आप few ohms की तरफ जाते हैं, 1 ohm, 2 ohm, right, 3, 10, lower values, right? वहाँ पे आपका Wheatstone bridge fail हो जाता है. So we use Kelvin bridge in those specific cases, right? How we modify Kelvin bridge itself is a modified version of Wheatstone bridge. So what are the modification? Let's move toward the modification. Actually जो आपका Wheatstone bridge है उसमें there is a minor issue कि if R is your unknown resistance and if we take into account because this R is very very small, तो हमें ये resistance जो आपकी lead resistance बनती है, कनेक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस बनती है उसको भी हमने टेक इनटू अकाउंट करना होता है बिकॉज वो एड अप हो जाती है. लेट्स से इट्स 0.1 0.5 लीड की रेजिस्टेंस, तो दैट विल एड अप इन योर एक्चुअल रेजिस्टेंस इफ यू आर डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट जहाँ पे आप अपनी लीड कनेक्ट करें. इफ यू आर कनेक्टिंग हेयर टोटली एड अप हो जाएगी इसमें. इफ यू आर कनेक्टिंग टू पॉइंट एम, ये सारी लीड रेजिस्टेंस एड अप हो जाएगी टू एस, राइट? सो दिस से कि यू शुड connect your galvanometer in such a way कि exactly mid पे connect हो, equal resistance add हो in R and in S, which is very difficult, but somehow the idea was कि जो आपका ratio बने of R1 and R2, it should be equal to the ratio of P and Q, right? Exact midpoint finding is difficult, right? So they move toward the concept of equalizing the ratio. If the ratio is equal, then ये आपका जो bridge है ये वायर की रेजिस्टेंस को कट आउट या निगलेक्ट कर सकता है एंड इट कैन इजीली वर्क. ठीक है, सो वही सेम इक्वेशन जो आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की थी, जस्ट देयर इज एन एडिशन ऑफ द लीड जो आपकी वायर है उसकी रेजिस्टेंस, बट वी आर सेइंग द फैक्ट के let's say we are connecting somewhere in to point D, so R plus R1 is equal to P divided by Q into S plus this R2, right? And from this इसी इक्वेशन को if you modify it Q, तो आपका इक्वेशन जो है you can rearrange it and you can see कि ये जो आपका R1 plus R2 है that is actually the total resistance of your wire, so you can also write it P divided by P plus Q into R, right? इसी तरह if you arrange flip it, अगर आप इसको flip कर दें, again आप इसको arrange करें for your values, right? सब आपका क्या हो जाएगा, R2 divided by R1 plus R2 is equal to Q divided by P plus Q, right? And again जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करने साइड पे ले जाएंगे तो ये आपका R2 is equal to Q divided by P plus Q times R हो जाएगा, right? Now this version and this version, इन दोनों को place it in this equation. So R plus P divided by P plus Q into R, P divided by Q, then R, then S plus ये जो आपने term find out किए ये place it here, right? And when you simplify this entire term in this version, right, आप इसका LCM ले लेंगे, ये आपकी टर्म बन जाएगी. ठीक है, आप यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, राइट? सिमिलरली यहाँ पे वी आर टेकिंग द LCM एंड LCM जो आपकी टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, P plus Q and P plus Q, राइट? एंड यू आर लेफ्ट विथ दिस टर्म विच इज आप अंदर मल्टीप्लाई करें जब R Q P plus R Q Q plus P R and Q, ठीक है, ये Q यहाँ से pick it and multiply it crosswise, ठीक है, आपने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है. इसी तरह P को इंटरनली मल्टीप्लाई करें देन आपकी हो जाएगी SPP 2 times P, राइट? एंड SQ and P plus Q into R, राइट? इसमें से ये टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं जो रेड से आपकी शो हुई हैं, राइट? बोथ आर कैंसिल आउट, दीज आर द 4 टर्म्स लेफ्ट.
एंड व्हेन यू कॉमन टेक आउट कॉमन, ये आपकी टर्म्स बच गई हैं जिसमें से दिस एंड दिस इज कैंसल आउट, एंड अगेन आपका रेशियो बचेगा आर इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू इंटू एस, विच इज़ द सेम रेशियो जो आपकी केल्विन ब्रिज सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है. नाउ देयर इज वन मोर अरेंजमेंट ऑफ केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, विच इज़ स्लाइटली मोर मॉडिफाइड देन द प्रीवियस वर्जन. यू कैन सी यहाँ पे आपके एक और रेशियो आर्म पी एंड स्मॉल क्यू ऐड किया गया है. सो दिस इज ऑल्सो अ वर्जन, ठीक है. इसमें क्या करते हैं, they actually say कि EAB this is A, this is your C and this is your B. So EAB is equal to P divided by P plus Q times E, right, which is actually voltage divider rule. So P divided by P, आपका this is equal to the P divided by P plus Q times, right. So you can also see कि EAC is equal to करंट टाइम आपका रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस और प्लस इन दोनों की पैरेलल कम्बिनेशन से यू नो दीज आर इन सीरीज, सो पी प्लस क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, ये आपकी पैरेलल कम्बिनेशन बन जाएगी, राइट. ये आपका हो गया ई ए सी का फॉर्मूला, राइट. इसी तरह ई ए एम डी को भी यू कैन फाइंड आउट, ए एम एन डी ये आपकी वैल्यू बनती है, दैट इज अगेन आई टाइम्स आर बिकॉज दिस इज द आर रेजिस्टेंस एंड देन द रेशियो टर्म, राइट, बिकॉज जस्ट पी हम ले रहे हैं इस पूरे रेजिस्टेंस ब्लॉक से, वी आर जस्ट टेकिंग दिस resistance, so P divided by P plus Q times this entire parallel combination, right. If you simplify it, P plus Q and P plus Q cancel out हो जाएंगे and just P R divided by P plus Q plus R times I is equal to EAMD. Now you place it in your this standard equation, right, which is saying that EAB is equal to EAMD, राइट, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन केस. जब आपका यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन केस, देन दीज टू शुड बी इक्वल एंड ई ए बी इज इक्वल टू दिस टाइम ई ए सी. सो पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू टाइम्स ई ए सी इज इक्वल टू आई टाइम्स this EAMD, right. When you simplify these two terms, then finally आपको कुछ इस तरह का रेशियो मिलेगा which says कि if these two ratio arms are equal, P by Q and P small p by Q, ये टर्म आपकी जीरो हो जाती है and again you go back to the Wheatstone bridge situation and आप लीड के रेजिस्टेंस या वायर के जो एडिशनल रेजिस्टेंसेज हैं उनको आप रिमूव करके टोटली जो आपका स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड नहीं कर सकता, वो आप केल्विन ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन देखना चाहते हैं इसका, राइट, सो दैट इज एक्चुअली P डिवाइड बाई P प्लस Q टाइम्स S plus R plus P plus QR is equal to that was I times this term, right. So I and I आपकी cancel out हो जाएंगे, I are removed, right, ये आपकी दो terms बच गई. So इनको arrange in a way कि जो आपकी ये जो terms हैं इनको we will simplify it, right. First of all take it on the other side, we have multiplied it here, right, invert हो गया, यहाँ पे just ये term रह गई है and then we are bringing the R terms on this side, right. Okay, ठीक है, multiplying on the inside R into P plus Q divided by P plus इसके साथ P plus Q divided by P, right, and I am then bringing this term on this side, right. So R is 1 minus again R common हो गया, ठीक है, इस टर्म का और इस टर्म का, P plus Q divided by P में से R आपने कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू ये इंटायर टर्म मैं यहाँ पे ले आई हूँ, राइट. सॉरी, ये तो आपकी ये यही वाली टर्म है, राइट. दिस टर्म इज हेयर माइनस एस माइनस दिस टर्म, ये सारी इस तरफ होगी, राइट. व्हेन यू टेक द एलसीएम, ये आपके पी कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q डिवाइड बाई P इंटू आर जो आपका सिंप्लीफाई होके ये वर्जन बन जाएगा, राइट. एंड ये टर्म, ठीक है, इसमें से दिस टर्म एंड इसका जब आप R अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, so P R divided by P plus Q plus R, again दोनों सेम है, this and this, so take that term common, P R divided by P plus Q plus R, and इसमें से ये बच जाएगा और वहाँ से आपका 1 आ जाएगा, -1, and then your next term is Q R divided by P plus Q plus R, right, and minus S. So this is the, when you simplify this again आप LCM लेंगे, Q कैंसिल जो आपका P कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका बच जाएगा and this is the term minus S, right. Similarly when you simplify it more,
minus PR divided by this. And finally the final version is, if you want to go through the details, ये आपका final version होता है, which is the same. And Kelvin bridge is a sensitive detector, right? And it is a better replacement of Wheatstone bridge, and it is uh, only issue is it has a very sensitive galvanometer, right? So this is all for your theory part. Let's move toward the lab part.